Audible, visible? Yes, sir. Okay. So as it is, आज हम next chapter शुरू करने वाले हैं NCERT economics के अंदर, and this is about human capital. First off, let's try and understand the difference between social capital and human capital. Social capital में हम ये कहते हैं कि लोग आपस में कितने belonged हैं, आपस में उनके रिलेशनशिप कैसे हैं, उनका कॉर्डियल फंक्शनिंग कैसा है, उस तरह से हम सोशल कैपिटल की बात करते हैं. तो इट्स लाइक अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, बॉन्डिंग बिटवीन पीपल. Maybe they come from diverse backgrounds. That's something called social capital. तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक एनजीओ काम कर रहा है या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही है, उसके काम करने की वजह या अच्छा काम करने की वजह सोशल कैपिटल हो सकती है. So people can function together in a better format or in a better way. Human capital एक individualistic level पे बात आती है. तो ह्यूमन कैपिटल में हम ये कहते हैं कि पढ़े लिखे होनहार क्रिएटिव लोग जिसमें कुछ एबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, तो उनको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं. ठीक है. सो इनको अगर प्लेस किया जाए तो वी हैव एन इवॉल्विंग काइंड ऑफ अ सेटअप. सबसे पहले वी विल हैव अ सोशल कैपिटल थ्योरी. अगर इसको आइडियोलॉजी के लेवल पे देखा जाए, लेट मी टेक यू टू द व्हाइट बोर्ड एंड ट्राई एंड एक्सप्लेन इट देयर. गिव मी अ मोमेंट. Here. Whiteboard is visible? Yes, sir. So, social capital theory क्या बोलता है? That states that social relationships are resources. One person connected to another person, if they have any kind of social relationship, this social relationship can give rise to economic relationship. They can produce goods and services for each other, exchange those goods and services. Yeah, they can have dependency upon each other. This can also lead to political relationship. If A, B, C, D are all connected to each other through one or certain kind of a social relationship, they can have one particular person be in charge of handling one particular affairs of their society. Maybe A is handling the financial part, B is handling the defense part, C is handling the welfare part, and D is handling the overall managerial part. Yeah. So that way, if they have a good social relationship, everything else can be then based upon that social relationship. Even today, what you have as a state is nothing but you have deeply embedded social relationships. Yeah. So that is the social capital theory of creation of state. Once this theory came in, so the next fallout of this theory was the human capital. So it is the economic value of a worker's abilities and outputs. तो जो पढ़े लिखे होनहार skillful लोग हैं, वो क्या produce कर सकते हैं at an economic level, तो उसको हम human capital बोलते हैं. इसका next है social capital. So this network enables societies and businesses to function effectively. So in social capital, what happens is now people have meaningful relationships with each other. They depend upon each other. They can cooperate with each other, and then that becomes social capital. यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर उन्होंने इस चीज की डेफिनेशन पूछी कि व्हाट इज सोशल कैपिटल. आई थिंक समवेयर इन 2016 इन प्रीलिम्स देयर वाज दिस क्वेश्चन. या ह्यूमन कैपिटल के ऊपर भी यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ह्यूमन कैपिटल. तो वहां पे वो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेल्थ वर्सेस नॉलेज, स्किल, एजुकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. तो इन चीजों का ध्यान रखना. अब एनसीईआरटी इनके ऊपर बहुत अच्छे से एक डेफिनेशन पर्सपेक्टिव हमें प्रोवाइड करता है, और ज्यादातर जो क्वेश्चन भी बनेंगे वो एनसीईआरटी में से बनेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर. ठीक है. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. सो इज द एनसीईआरटी विजिबल टू यू? Yes. Okay, so this is the chapter 5th. So think of one factor that has made a great difference in the evolution of mankind. So आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? I think that factor is language.
because through language we are able to store and transmit knowledge. Yeah. So perhaps it's man's capacity to store and transmit knowledge, which he has been doing through conversation, through songs, and through elaborate lectures. But man soon found out that we need a good deal of training and skill to do things efficiently. We know that labor skills of an educated person is more than that of an uneducated person, and hence the former is able to generate more income than the latter, and his contribution to economic growth is consequently more. Education is sought not only as it confers higher earning capacity on the people, but also for its other highly valued benefits. That is, it gives one a better social standing and pride, enables one to make better choices in life, provides knowledge to understand the changes taking place in society, and it also stimulates innovation. अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया रिसेंटली 2020 के अंदर, तो आपको सपोज एजुकेशन के ऊपर ऐसे लिखने को आ जाए या कोई आंसर लिखना पड़ जाए, तो ये वाली जो लाइंस है ना एनसीईआरटी की, ये वहां मेंस आंसर राइटिंग में या एसे राइटिंग में बहुत काम आएंगे. ठीक है, क्योंकि जर्नलिस्टिक लेवल पे ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं होती, ये एकेडमिक लेवल पे ही होती है. So make sure you carry this along at the time of your essay also. Okay. So moreover, the ability of educated labor force facilitates adaptation of new technology. Economists have stressed the need for expanding educational opportunities in a nation as it accelerates the development process. जितना ज़्यादा education होगा, जितनी ज़्यादा training होगी, skillful base बनेगा, उतना ज़्यादा economic growth और development की possibility है. Okay, now what is human capital? तो इसकी definition जो है basic वो क्या है? Let's see. So societies need sufficient human capital in first place. So in the form of competent, educated, and trained as professors and other professionals. In other words, we need good human capital to produce other human capital. And this means we need investment in human capital to produce more human capital out of human resources. पढ़े लिखे होनहार लोग पढ़े लिखे होनहार लोगों से ही आएंगे. So let's understand a little more of what human capital means by posing following questions. What are the sources of human capital? Is there any relation between human capital and economic growth? Is the formation of human capital to man's all-around development, or it is now called human development? What role can the government play in human capital formation in India? So इसी तरह से मेंस में डायरेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं. उसमें थोड़ा सा हम करंट डेटा देते हैं कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रखा है, so then that completes the answer. Let's see. So sources of human capital. First is investment in education is considered as one of the main sources. तो इंडिया में जैसे हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, आर्टिकल 21 कैपिटल ए के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन राइट है, तो इसके हिसाब से education up to class 8th is given free of cost to everybody in India. तो ये एक तरह की गवर्नमेंट एजुकेशन है. उसके बाद फिर आपका पर्सनल एंडेवर है. Now, this is one of the main sources of human capital, and there are several other sources as well. For example, investment in health, job training, migration, information, and so many else. So they are all sources of human capital formation. Okay. So एजुकेशन, हेल्थ, स्किल, ये तीन चीजें अगर बढ़िया से हैं तो फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है. ओके, नाउ लेट्स सी. अब उसी पर इन्होंने ज्यादा वर्कआउट किया हुआ है, ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है. नथिंग मच टू रीड हियर. ऊपर जो पैराग्राफ में बता दिया वही है. ओके, सो प्रिवेंटिव मेडिसिन लाइक वैक्सीनेशन, क्यूरेटिव मेडिसिन लाइक मेडिकल इंटरवेंशन, एंड सोशल मेडिसिन लाइक स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी and provision of clean drinking water, good sanitation, etc. are various forms of health expenditure. इंडिया में ये हेल्थ एक्सपेंडिचर के ऊपर कोविड से पहले जो आउटले रहा है बजट के अंदर, इट वाज हार्डली 1 to 2%. पोस्ट कोविड ये डेफिनेटली अब इंक्रीज हुआ है. ओके, सो फर्म स्पेंड ऑन गिविंग ऑन जॉब ट्रेनिंग टू देयर वर्कर्स. जैसे आप यूपीएससी में सिलेक्ट होंगे तो पहले तो आपकी प्री जॉब ट्रेनिंग है, उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग भी चलती रहती है. ठीक है, तो उससे क्या होगा, यू विल बी गेटिंग बेटर स्किल्स एंड रियल टाइम वर्क स्किल्स, नॉट जस्ट एजुकेशन. वो तो ठीक है, एक बेस आपका तैयार करेंगे. ठीक है, देन पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब्स दैट फेच देम हायर सैलरीज.
than what they may get at their native places. जैसे आमतौर पे rural to urban या tier 2 से tier 1 cities में या tier 3 से tier 1 cities में migration होती है. Yeah. So unemployment is the reason for rural urban migration in India. Technically qualified persons like engineers and doctors migrate to other countries also because of higher salaries that they may get in such countries. For example, people who are probably a chartered accountant or a commerce graduate may not get as much good opportunities here as they may get abroad, so they just migrate. Similarly, engineers and doctors, उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा तो वो बाहर चले जाएंगे. This will keep happening. So migration in both these cases involves the cost of transport, higher cost of living in the migrated places, and psychic cost of living in the strange socio-cultural setup. So migration के साथ related तीन major costs हैं. The enhanced earning in the new place outweighs the cost of migration. Hence, expenditure on migration is also a source of human capital formation. तो यूपीएससी में एक ये भी क्वेश्चन आया, which of the following are the sources of human capital formation? इसमें माइग्रेशन एक उन्होंने क्वेश्चन में डाला हुआ था, ठीक है? तो that's why it's important to understand. Then people spend to acquire information relating to labor market and other markets like education and health. For example, people want to know the level of salaries associated with various types of jobs, whether educational institutions provide the right type of employable skills, and at what cost. So this information is necessary to make decisions regarding investment in human capital, as well as for the efficient utilization of acquired human capital stock. So expenditure incurred for acquiring information relating to labor market and other markets is also a source of human capital formation. So now this particular distinction between physical and human capital is very important. इसके ऊपर बेस्ड भी prelims में क्वेश्चन आया हुआ है. देखो क्या है. See, कैपिटल अगर मैं सिंगल वर्ड लेता हूं तो उसका मतलब है एक एसेट जिसमें से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे कुछ रिटर्न आएगा, ठीक है? सो इट इज समथिंग व्हिच विल गिव मी some amount of benefit in future. Okay, so let's try and understand. Both the forms of capital formation are outcomes of conscious investment decisions. Decisions regarding investment in physical capital is taken on the basis of one's knowledge in this regard. Entrepreneurs possess knowledge to calculate expected rates of return to a range of investments. मतलब let's say मैं किसी चीज के अंदर 1 लाख रुपया लगा रहा हूं, तो अगर मुझे 10% रिटर्न आ रही है तब शायद आई बी इंटरेस्टेड, या कहां पे वो पैसे लगाए जाएं कि ज्यादा रिटर्न आए. And then rationality or rationally decides which one of the investment should be made. कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, that's basically on the rate of return calculation. Okay. The owner of physical capital is the ownership of physical capital is the outcome of conscious decision of the owner. The physical capital formation is mainly an economic and technical process. A substantial part of human capital formation takes place in one's life when she or he is unable to decide whether it would maximize his or her earning. तो ह्यूमन कैपिटल कब क्रिएट हो रहा है? जब बच्चा छोटा सा है और उसको पढ़ाना शुरू कराते हो, या घर में जो फैमिली वैल्यूज क्रिएट कर रहे हो, तो तब से ह्यूमन कैपिटल बनना शुरू हो गया. Yeah. So children are given different types of school education, healthcare facilities by their parents and society. The peers, educators, and society influences the decisions regarding the human capital investments, even at the tertiary level, that is at the college level, primary, secondary, tertiary, like that. Moreover, the human capital formation at this stage dependent upon already formed human capital at school level. तो जैसे स्कूल में आप जा रहे हो उस हिसाब से आप में भी human capital creation होगा. So it is partly a social process and partly a conscious decision of the processor of the human capital. तो कुछ चीजें तो जिस तरह की सोसाइटी में आप जा रहे हो उसके हिसाब से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, और कुछ आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि आप किस तरह की ह्यूमन कैपिटल खुद के लिए जनरेट कर रहे हो. Yeah. So you know that the owner of physical capital, say a bus, needs not be present in the place where it is used. Whereas a bus driver who possesses the knowledge and ability to drive the bus should be present when the bus is used for the transportation of people and material. So physical capital, अभी जो पेपर में उन्होंने टर्म यूज किया यूपीएससी ने, physical capital is tangible.
That means physical, and can be easily sold in the market like any other commodity. While human capital is intangible, touch it, feel it like that. So it is endogenously built in the body and mind of its owner. Human capital is not sold in the market. ऐसा नहीं है ना 10 रुपए की अकल दे दो, ऐसा तो नहीं होने वाला. Only the services of human capital are sold, and hence there arises the necessity of the owner of the human capital to be present in the place of production. आजकल तो टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा बहुत चेंज हो गया है. Like we have telemedicine, for example. So the doctor can give you the advice over a phone or maybe on an internet or something. The physical capital is separable from the owner, whereas human capital is inseparable from its owner. ये वाली जो statements आपने अभी पढ़ी, tangible, intangible, commodification or non-commodifiable, and this inseparable or separable, ये statements को UPSC prelims में use करता है. ठीक है? So the two forms of capital differ in terms of mobility across space. Physical capital is completely mobile, yeah, between countries, etc. So you have all kinds of ways to send one thing from here to there. While human capital is not perfectly mobile between countries, as movement is restricted by nationality and culture. So therefore, physical capital formation can be built even through imports. यहाँ पे आपके पास कोई एक पर्टिकुलर मशीन नहीं है, कहीं से मंगवा सकते हो, पर्टिकुलर बस नहीं है, कहीं से मंगवा सकते हो, लेकिन ह्यूमन कैपिटल थोड़ा मुश्किल है, वो तो माइग्रेशन के बेसिस पे होगा. So whereas human capital formation is to be done through conscious policy formulation in consonance with the nature of society, economy, and expenditure by the state and individual. Okay. So both forms of capital depreciate with time. Human capital भी depreciate कर सकता है, age, or physical capital भी depreciate कर सकता है. Let's say there is a bus, so it has a certain lifetime. Yeah. Continuous use of machine leads to depreciation, and change of technology makes a machine obsolete. In case of human capital, depreciation takes place with aging, but can be reduced to a large extent through continuous investment in health and education. So this investment also facilitates human capital to cope with the change in technology, which is not the case with physical capital. अब किसी एक गाड़ी खरीदी आपने, वो तो with time 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद ultimately आपको रिटायर करनी पड़ेगी. उसको कितना अपग्रेड करते रहोगे. ऐसे ही बॉडी भी है, ह्यूमन बॉडी, वो 70-80 साल तक हम उससे काम ले लेंगे, लेकिन उसके बाद कभी ना कभी तो उसकी जान छोड़नी पड़ेगी. बस ठीक है यार, हो गया इसका. तो इस वजह से दोनों ही डेप्रिशिएट करते हैं. ये वाली पर्टिकुलर टर्म भी, लाइन भी यूपीएससी पेपर में यूज कर सकता है. बोथ फॉर्म्स ऑफ कैपिटल डेप्रिशिएट विद टाइम. Okay, so nature of benefit flowing from human capital are different from physical capital. Human capital benefits only the owner, but also not only the owner but also the society in general. महात्मा गांधी ह्यूमन कैपिटल है इंडिया के लिए, तो उन्होंने एज अ सोसाइटी इन जनरल को भी हेल्प किया. एक टीचर ह्यूमन कैपिटल है, तो एज अ सोसाइटी इन जनरल उनको भी हेल्प करता है. दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल बेनिफिट. So an educated person can effectively take part in democratic process and contribute to the socio-economic progress of the country. A healthy person, by maintaining personal hygiene and sanitation, stops the spread of contagious diseases and epidemics. COVID-19 is an example. Human capital creates both private and social benefits, whereas a physical capital creates only private benefits. So that is, the benefits of capital goods flow to those who pay the price for the products and services produced by it. So एक ये भी differentiating factor हमारे पास human और physical capital का आ गया. तो इनके basis पे similarities और dissimilarities के basis पे prelims में question बहुत बनते हैं. Okay. Now, what's the relationship between human capital and economic growth? Definitely, if there is human capital and it can be profitably employed somewhere, remuneratively employed somewhere, then definitely they will create economic growth. But अगर human capital को employment नहीं मिल रहा, तो फिर economic growth भी कहाँ से होगा? बस इसी चीज के ऊपर ये सारी बहस है. ठीक है, तो कुल मिला के ह्यूमन कैपिटल से लेबर सप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उनके लिए इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनके लिए जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी. उसके बेसिस पे वो काम कर सकते हैं. ठीक है, डेफिनेटली फिर जब जॉब्स क्रिएटेड होंगी तो वो बेटर उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे जितनी ज्यादा ह्यूमन कैपिटल आपका स्ट्रांग है.
या ह्यूमन कैपिटल बेस स्ट्रांग है, कुल मिला के स्किल्ड एजुकेटेड वर्कर्स होंगे आपकी इकोनॉमी के अंदर, तो वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे. That's what is discussed here in this particular section. Okay. Now, in this, what you need to note down is that India recognized the importance of human capital in economic growth long ago. The seventh five-year plan says human resource development has a necessity to be assigned a key role in a development strategy, particularly in a country with large population. In a trained and educated on sound lines, a large population can itself become an asset in accelerating the economic growth and in ensuring the social change in desired directions. So, कुल मिला के ये हमारे 7th 5-year प्लान की स्टेटमेंट है और इसी के बेसिस पे हम भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आज भी फोकस्ड हैं. ओके, सो मूविंग ऑन. Two independent reports on Indian economy in recent times have identified that India would grow faster due to its strength in human capital formation. The Deutsche Bank, a German bank, in its report Global Growth Centers, identifies India will emerge as one among the 4 growth centers in the world by the year 2020. अभी इनको पता नहीं था ना COVID-19 भी होना बीच में, तो खैर, definitely we are a positive story in any case. It further states our empirical investigation supports the view that human capital is the most important factor of production in today's economy. Increase in human capital are crucial to achieving increase in GDP. देखो आज एप्पल अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसके पीछे भी कारण क्या है? ह्यूमन कैपिटल. नहीं तो अगर हमारे पास स्किलफुल एम्प्लॉयबल लेबर ना हो तो कोई भी एक हाई एंड टेक्नोलॉजी कंपनी इंडिया में प्रोडक्शन क्यों करेगा और कैसे करेगा? क्योंकि उसको फिर लेबर नहीं तो कहीं से लानी पड़ेगी और वो बहुत कॉस्टली प्रोसेस होगा. Yeah, so that's why having a good human capital base is essential. Now, World Bank in its recent report, India and the Knowledge Economy, Leveraging Strengths and Opportunities, तो इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं ये मीन्स में काम आती हैं, ठीक है, states that India should make a transition to a knowledge economy if it uses knowledge as much as Ireland does. So then the per capita income of India will increase from a little over $1,000 in 2002 to somewhere near $3,000 in 2020. अभी हमारा जो per capita income है 1500-1600 US डॉलर के आसपास है, ठीक है. कोविड की वजह से थोड़ा सा नीचे आया, पहले करीब 1700 के आसपास था. ओके, देन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. See, before going into human capital and human development, let's try and understand the concept of development. Okay, so development जो है, anybody, what is development? हाँ जी. Improvement in the standard of living. Okay, good. That is one of the results of development. But as a process, जब भी ये MENT लगता है ना किसी के पीछे वर्ड में, तो then that means कि it is a process. पहले तो ये समझ लो, ठीक है. So now, what is development? So it's a process of transition from a state of inability to a state of ability. State of ability. ठीक है. So it's a process of transition. तो अभी एक अलग अलग तरह की इनेबिलिटी से एबिलिटी की तरफ मूवमेंट हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, तो दैट इज फ्रॉम फिजिकल इनेबिलिटी और मेंटल इनेबिलिटी टू अ स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी. दैट्स अ चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना. ऐसी जब हम बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो इट इज फ्रॉम इकोनॉमिक इनेबिलिटी टू इकोनॉमिक एबिलिटी. ऐसे ही पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सो पॉलिटिकल इनेबिलिटी टू पॉलिटिकल एबिलिटी. इकोनॉमिक इनेबिलिटी का मतलब क्या होता है स्पेसिफिकली? इट मींस प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज, जो 4 शब्द मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है. सो अगर हम कुछ प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, कंज्यूम या एक्सचेंज नहीं कर पा रहे, दैट्स द इकोनॉमिक इनेबिलिटी, एंड योर ट्रांजिशन टुवर्ड्स दिस विल क्रिएट द इकोनॉमिक एबिलिटी. सो दैट इज वन पार्ट, बट इट इज नॉट द ओनली थिंग. जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक चीज इसमें और लिखते हैं,
वो क्या है? It is a positive and simultaneous change. जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है तो क्या आता है उसमें? पॉजिटिव एंड साइमल्टेनियस चेंज इन सोशल and economic indicators. Social and economic indicators. So this is another way of defining economic development. Yeah. हमारे पास डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए अलग अलग तरह के इंडिसेस भी हैं, उनके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे. फॉर एग्जांपल देयर इज वन व्हिच यू माइट हैव हर्ड ऑफ, इट्स कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. So it judges upon the human development index in the formats of per capita income, life expectancy and educational achievement. ये 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट को जज करते हैं. ठीक है, तो अलग अलग लेवल्स पे वी कैन कंसिडर व्हाट इज डेवलपमेंट. एक इसमें बेसिक जो डिक्शनरी मीनिंग समझने वाला है, दैट इज रिलेटेड टू चेंज, बिकॉज इट इज समथिंग लाइक अ चेंज ओनली. सो ए चेंज विच इज, लिखना है तो लिख सकते हैं आप कॉपी पेन लेके. ए चेंज विच इज पॉजिटिव and fast, it's called revolution. Okay, a change which is positive and slow is called evolution. Okay, change which is positive and desired is called progress. Change which is positive and directed is called development. Okay, so this is another way you can think about it. When I say revolution, you have heard about green revolution, हमने बात की थी. हर किसी को उसका फायदा नहीं मिला. क्यों? Because everybody cannot change that fast. Not everyone will have the capability to adapt at that pace. Yeah. When we say evolution, so for example, we have evolved from monkeys, you know. Our genetic evolution has happened from there. So the DNA is 1.23% different from that of a chimpanzee. Okay. Imagine just 1.23% can make a large difference. Otherwise, we are also the same. Okay. So that's slow. But have you seen कि कोई भी बंदा ऐसा है जो आज भी बंदरों जैसी हरकतें कर रहा है? कुछ कर रहे हैं, बच्चे करते हैं, लेकिन after they attain a certain age, they don't have tails, they don't look like monkeys, everybody looks like human being only. So although it is slow, it is inclusive. So whenever revolution happens in this kind of a change, it's exclusive in nature. Means those who are capable, they will be able to adapt. This change, evolution, is much more inclusive in nature because it is slow and steady. So it will build the capability. Okay. When we say progress, so it is desired what you want. According to you, you will judge your progress. ठीक है यार, मेरे 70% नंबर आ रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. ठीक है, that's it. So that's your progress. अगर आपको लगेगा मुझे और चाहिए, then that will define you. So that's the desired part in progress. When we say development, this is a change which is directed. So who will direct development? Maybe the government, maybe the society, maybe the family or your parents. Yeah. So somebody will direct. बेटा अभी इस स्टेज पे हो, इसके आगे ability create करने के लिए ये next stage है. Maybe your boss will direct you. Yeah, somebody will direct you. Some senior can direct you. So this is the way you create more and more ability within you. Fine. Tomorrow, maybe artificial intelligence can direct you. So there are various ways that somebody will give you the instruction as to this is the next level of ability you need to create, and then that will keep on defining development. Okay. Now, whenever we talk about human development, there is one basic thing that you need to remember. There is no upper limit to human development. For a human being, there is no top line. There is only a bottom line. You just get born, and then at that born, you are at a
zero stage of development. From there on, there is no top line. You can just continue as much development as there can be. इसीलिए जब हम बोलते हैं these are developed countries and there are developing countries. Two kinds of countries we have. So these developing countries are still trying to reach the level of the developed countries, but it does not mean कि developed countries ने education, health या human resources के ऊपर काम करना बंद कर दिया. वो तो काम कर रहे हैं, वो उसमें और better करने की कोशिश कर रहे हैं. Why? Because there is no top line to human development. Okay, it can always improve. For example, Norway and Sweden, these are the countries which are always at the top in human development index. Okay, but that does not mean कि वहां पे अब government education पे ध्यान नहीं देती या health पे ध्यान नहीं देती. They are continuously trying to create better standards of health, education, social belongingness, human capital, social capital, everything. Okay, चलिए अब वापस आता है. So human capital and human development. So the two terms sound similar, but there is a clear distinction between them. Human capital considers education and health as a means to increase labor productivity. Human development is based on the idea that education and health are integral to human well-being, because only when people have the ability to read and write, the ability to lead long and healthy life, they will be able to make other choices which they value. So perspective is different. In human capital, we are trying to create a resource which will work for something else. In human development, we are trying to create a capability within a person to work for themselves. Okay, so the difference is in perspective. So human capital treats human being as means, while human development treats human beings as ends. So that's the difference. Okay, so human welfare should be increased through investment in education and health. So that's the main thing. Through that, you will develop both human capital and human development. Okay, so then state of human capital formation in India. So let's see how we are doing in this. So we know that ours is the federal country with union government, state government, local governments like municipalities and panchayats. And the Constitution of India mentions functions to be carried out at each level of government. हमारे पास Schedule 7 है जिसके अंदर state list, concurrent list, union list ये सब lists हैं. तो उसमें areas of work defined है state governments के लिए भी, central government के लिए भी, और कौन से जो हैं वो साथ में मिलके करेंगे. इसी तरह से पंचायत और municipalities के लिए भी Part 9 और 9A हैं. उसके अंदर Constitution में defined है कि उनकी क्या-क्या responsibilities. So before we take up the analysis of education sector in India, we will look into the need for government intervention in education and healthcare sector. यहाँ पे ना ये बहुत अच्छे से एजुकेशन के ऊपर वर्कआउट नहीं होगा, सिर्फ कुछ 2-3 चीजें हैं, सिर्फ वही देखनी है. रेस्ट जो मैंने आपके साथ आज करंट अफेयर्स शेयर किए हैं, दे आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑल्सो, सो इट्स बेटर दैट यू लुक एट थ्रू देम. आज मैंने आपके साथ एक वेबसाइट लिंक शेयर किया था इन योर व्हाट्सएप ग्रुप इटसेल्फ. So on the website, let me show you where it is. So you go to civilservicesonline.com, that's our website, and you go here, free resources. Don't click on free resources specifically, just use it as a drop down menu. Then go to this weekly current issues and analysis. तो यहाँ पे हर हफ्ते के आपके करंट अफेयर्स जो हैं वो यहाँ अपलोड होते रहते हैं. ठीक है, तो you go here, click on this link and a PDF would open. That's the weekly current affair for the last week. So इसमें से अब जो सारे सेक्शन वाइज आपके करंट अफेयर्स होते हैं, पॉलिटी में क्या डेवलपमेंट हुआ, आईआर में, कल्चर, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी, ओके, गवर्नेंस, सोशल इश्यूज एंड सो ऑन. सो इसमें अब हमारा जो एज दिस जहां जहां पे जो भी डेवलपमेंट होगा वो सारा इधर आ जाएगा. वीकली बेसिस पे वी विल बी ट्रैकिंग. इट्स गोइंग टू बी अराउंड 50 to 60 पेजेस एवरी वीक. ओके, सो डेली यू शुड रीड अबाउट 10 पेजेस. टारगेट इट लाइक दिस. अच्छा, तो इसके अंदर अब जो एजुकेशन के ऊपर नेशनल अचीवमेंट सर्वे है एक, so that talks about education. Okay, so let me take you to that. Will not be using the PDF here. I'll be using the PDF that is available with me.
So that will be much more responsive for this work. उससे प्रेजेंट एजुकेशन का स्टेटस समझ आएगा क्योंकि जो एनसीईआरटी है उसमें ये अपडेटेड नहीं है, एज यू कैन बी वेल अवेयर. Give me a moment. Visible? Yes, sir. So National Achievement Survey 2021. Here. So recently the Ministry of Education has released the National Achievement Survey 2021 report. So it's a triennial survey. 3 साल में एक बार होगा. About 34 lakh students of 1.18 lakh schools in 720 districts from both rural and urban areas have participated. So basically, it's not all the students. It's like they take a sample and then they make a study. So let's see what all they were able to understand. So the nationwide survey is to assess the learning outcomes and health of the education system. It is the largest nationwide sample-based educational survey conducted across India. The nodal ministry here is the Ministry of Education, which will take care of the survey. Now, the Central Board of Secondary Education conducted the NAS National Achievement Survey 2021. तो मिनिस्ट्री एजुकेशन की है, लेकिन कंडक्ट करने वाली बॉडी कौन सी है? सीबीएसई है. So NCERT designed an assessment framework and tools for NAS 2021. It provides a system level reflection on effectiveness of school education. So that's what they want to check. Okay. Now it collects information on relevant background variables such as school environment, training process, and student home and background factors. बहुत सारी चीजें ध्यान में रख के ये सर्वे किया गया है. Now, it covers the whole spectrum of schools, including government schools, government aided and private schools across the India, mediums and grades. So NAS 2021 conducted in 22 mediums of instruction. So basically language-wise diverse. It was conducted in different subjects for different grades. The subjects and grades were grade 3, grade 8 and grade 10. So 3, 5, 8 and 10 ये basic level पे उन्होंने check किया. और सब्जेक्ट्स भी अलग अलग लिए. सो लैंग्वेज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स इन 3 and 5. 8 के अंदर भी ये सारे हैं, प्लस यू गॉट सोशल साइंसेस. 10th में भी ऑल द सेम, प्लस द इंग्लिश लैंग्वेज. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? सो वी वांट टू चेक द लर्निंग कर्व एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ चिल्ड्रन. सो व्हाट डिड दे फाइंड आउट? सो नेशनल एवरेज इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फॉर क्लास 3rd was 59%, which declined by 10% to 49% in class 5th. मतलब अगर 3rd क्लास में 100 बच्चे हैं हमारे पास, तो 5th क्लास आते आते 90 रह जाएंगे. ठीक है. Then it further declined to 41.9% in class 8 and then 37.8% in class 10. ये तो आपको भी अपने स्कूल डेज से याद होगा कि जब आप नर्सरी से 10th तक जा रहे थे तो कितने धीरे धीरे बच्चे कम होते गए. So the performance recorded a decline in almost all subjects. For instance, mathematics score nationally was 57% in class 3 and dropping to almost 10% to 44% in 5th and 36% in class 8 and 32% in class 10. मतलब 10th आते आते तो बच्चों का मैथ्स की ऐसी तैसी हो जाती. But not all, Shruti is an exception. So the language score nationally was 62% in class 3rd and dropped to 52% in class 5th and so on. So basically the score is dropping as you move along. What is the reason for this? So that's more interesting. Let's see what the report has to say. Average performance of schools in rural areas remained significantly below those in urban areas and union territories. Social group performance wise, so the performance of students from SC, ST and OBC remained lower than that of students in general category. Now you can understand कि competition में भी क्यों हम lower cutoffs award करते हैं. Then gender wise performance. So average performance of girls remained better than boys. ये तो UPSC का इस साल का result भी reflect करता है. All the top rank 3 students are girls.
The perception of students about learning. So the perception of students about learning at home during the pandemic when the schools remained closed, and 78% of students termed it as burdensome with a lot of assignment. At least 38% of students faced difficulty in learning at home, while 24% said they did not have digital devices at home. भी तो सबके लिए possibility नहीं है ना. Now, for example, I am into online education. The first question that I ask anybody who is wanting to enroll is, भाई लैपटॉप है? तो उसमें भी मुझे आंसर ज्यादातर बच्चों से ये मिलता है कि सर नहीं, फोन पे क्लास देखेंगे. मैं क्या भाई सॉरी पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर आप रोज 2-2.5 घंटे फोन पे क्लास देख रहे हो फिर उसके बाद 2-2.5 घंटे पढ़ भी फोन पे रहे हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट. So primarily you need to invest in that. Okay. So how did the states perform? And again, investing in that is not very easy for most of the people. So the majority of the states performed significantly below the overall national score. So Delhi's performance in class 8 and 10 was better when compared to national average. Punjab has scored the highest in all subjects in class 3, 5, and 8. The credit of this goes to our education secretary of Punjab. Very humble, very hardworking person. And that's how it actually happened. क्योंकि school level पे उन्होंने बहुत काम किया. Okay. So now the representation of women in armed forces. Let's see. This is another current affair development. तो ये इस तरह से आपके current affairs आएंगे. आपको basically करना क्या है? These are from Hindu, Press Information Bureau, Indian Express, Down to Earth. अलग अलग sources हैं जहां से compiled हैं. तो एक रीडिंग देना है जहां पे जिस चीज की बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड भी साथ में दी गई है. यूपीएससी के अंदर अगर कोई क्वेश्चन उसमें से आया तो वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे दिया विद एक्सप्लेनेशन एंड आंसर. सो गिव इट अ रीडिंग एटलीस्ट 10 पेजेस पर डे. ओके, कमिंग बैक टू आवर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. सो जो आपने देखा, दैट्स हाउ वी आर असेसिंग एजुकेशन टुडे. ये पुराना यहाँ पे दिया हुआ है. नाउ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया. सो ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. ये देखने वाली बात है कि सरकार पैसे कितनी खर्च करती है एजुकेशन के ऊपर. आज की डेट में करीब 1 से 2% के बीच में जो एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर है. ठीक है, और ये कुछ खास सुधर नहीं रहा. ड्यूरिंग 1952 to 2014, education expenditure as a percentage of total government expenditure increased from 7.92 to 15.7, as a percentage of the GDP increased from 0.64 to 4.13. So 1952 में it was 0.64% of GDP. Now it's about 4% of GDP, but again it is always coming back to 1 to 2%. Why? Because it is not the primary concern right now. Health के ऊपर ज़्यादा expenditure कर रहे हैं. To this, if we include the private expenditure incurred by the individuals and by philanthropic institutions, the total education expenditure should be much higher. So definitely, out of pocket expenditure education के ऊपर ज़्यादा है, सरकार के द्वारा कम किया जाता है. Elementary education takes a major share of the total educational expenditure, and the share of higher and tertiary education is the least. कारण क्या है? Right to education elementary education के लिए है, 8वीं कक्षा तक है. Okay. Now, as we expand school education, we need more teachers who are trained in higher educational institutions. Therefore, expenditure on all levels of education should be increased. That's what we need to do. Himachal Pradesh is a leading state in this education expenditure, while Bihar is the last one, yeah, in most of the surveys. Now, about 50 years ago, the Education Commission had recommended that at least 6% of GDP should be spent upon education so as to make a noticeable rate of growth in the educational achievement. So there is a Tapas Majumdar committee appointed by Government of India in 1998, which estimated an expenditure of 1.37 lakh crore over 10 years to bring all Indian children in the age group 6 to 14 in the purview of school education. So that's what we are trying to do in the Right to Education also. So 86th Constitutional Amendment Act was brought in and Right to Education was created as Article 21 capital A. Just for this. Then next aspect dekhte hain. So in 2009, the Government of India enacted the Right to Education Act to make free education a fundamental right for all children in age 6 to 14. That's what I'm talking about.
So government of India has also started levying a 2% education cess on all union taxes. मतलब जो भी टैक्स है उसके ऊपर 10% सेस अलग से कलेक्ट किया जाएगा. So that will be then spent only on education development. सेस का कंसर्न ही ये है, ये जिस चीज के लिए कलेक्ट होगा उसी के लिए खर्च भी किया जाएगा. ठीक है. सो प्रेजेंटली लिटरेसी रेट्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट किस तरह से हुई है. So adult literacy rate in India is about 81% in males and 63% in females in 2015. And primary completion rate, that means how many people are passing the primary section, तो वो काफी अच्छा है इंडिया के अंदर. Youth literacy rate, that's between 15 to 24, is also high. So presently we are doing good as far as literacy is concerned. So education achievement in India. So educational achievements in the country are indicated in terms of adult literacy levels, primary education completion and youth literacy rate. एक तो ये definition याद रखनी, ठीक है. तो इनके statistics आपने ऊपर देख लिए. Statistics से ज्यादा important question जो बनेगा वो definition के basis पे बनेगा. कौन से ऐसे 3 चीजें हैं जो हम check करते हैं to see educational achievement in India? Now, what are the future prospects? Education for all is still a distant dream. We want everybody to be well educated. So that's a part and parcel which will happen with time only, not like the overnight kuch achievement ho jayega. Second issue is gender equity. It is better than before, but yet we have to perform better. There is still a scope for improvement. देखिए यहाँ पे 81 और 63 एक gap आ रहा है ना, तो ये नहीं होना चाहिए. Gender gap in terms of literacy rate. Okay. So as per the NSSO data in the year 2011-12, the rate of unemployment among youth males who studied graduation and above in rural areas was 19%. Their urban counterparts have unemployment rate at 16%. So rural versus urban में फर्क है. Then the most severely affected once were the young rural female graduates, as nearly 30% of them are unemployed. So that's quite a lot. In contrast, this only about 3 to 6% of primary level educated youth in rural and urban area were unemployed. Therefore, the government should increase the allocation for the higher education and also improve the standard of higher education institutions. This is what we need to be working upon in terms of education. So that's that with respect to social capital and human capital. Okay. Next in line for us within NCERT is rural development. See, इंडिया में आज भी 63% जनसंख्या जो है वो रूरल एरियाज में रह रही है. और अगर रूरल एरियाज की डेवलपमेंट नहीं होगी तो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया की डेवलपमेंट नहीं होगी. 63% ऑफ इंडिया स्टिल रूरल, 37% के आसपास हमारे पास अर्बन पॉपुलेशन है. तो इस वजह से इसके ऊपर काम करने की काफी जरूरत है. दैट्स व्हाट वी आर डीलिंग विद रूरल डेवलपमेंट. लेकिन रूरल डेवलपमेंट में मेन कंसर्न या प्रॉब्लम कहाँ से आती है कि number of institutions which are involved in rural development are so many that they are generally, pointing fingers at each other without taking the responsibility on their own. इस वजह से रूरल डेवलपमेंट के हालत कुछ खास अच्छी नहीं है. तो जैसे बोलते हैं ना, टू मेनी शेफ्स स्पॉइल द ब्रॉथ, वो वाली बात हो रही है. So it's a comprehensive term. It essentially focuses on the actions for development of areas that are rural or lagging behind in overall development in village economy. So some of the areas which are challenging and need fresh initiatives for development in rural India include: first is human resources in terms of literacy, education, skill development, health. Then land reforms. Then development of productive resources, infrastructure, electricity, irrigation, finance, and so on. Roads, highways, R&D, special measures for alleviation of poverty and inclusive growth and development. So ये कुछ एरियाज हैं जिन पे काम करने की जरूरत है. लेकिन इन एरियाज के ऊपर जो काम किया गया है इंडिया में वो बहुत सेगमेंटल है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है. एक दूसरे को देख के काम नहीं होता कि इसने अगर ये कर लिया तो इसके साथ में मिलते हुए अगर ये वाला काम करूं तो दोनों काम मिलके ज्यादा अच्छा रिजल्ट डिलीवर करेंगे. इस तरह से नहीं है वर्कआउट. It is segmental. Every department or every nodal agency is working in their area of expertise, and therefore, nothing much substantially comes out of it.
तो अपनी अपनी एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज से काम नहीं होता, लेकिन चल ऐसे ही रहा है। खैर, लेट्स सी क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। सो इंडिपेंडेंस के टाइम पे ज्यादातर मनी लेंडर्स हुआ करते थे, और ज्यादातर लोगों को अगर रूरल क्रेडिट की बात करें तो या तो मिलता नहीं था, और अगर मिलेगा तो जमीन गिरवी रख के मिलेगा, इस तरह की सिचुएशन थी। So growth of rural economy depends primarily on the infusion of capital and from time to time to realize higher productivity in agriculture and non-agriculture sectors. कुल मिला के कहीं पे भी इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट करना है तो इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, हमने पहले साइकिल में देखा एक लेक्चर के अंदर। As the time gestation between crop sowing and realization of income after production is quite long, आमतौर पे 3-4 महीने तो मिनिमम लगते ही हैं, farmer borrows from various sources to meet their initial investment on seed, fertilizer, implements, and other family expenses. So ये जो borrowing है, यही उसकी main concern भी है कि कम rate पे मिल रहा है या नहीं। At the time of independence, money lenders and traders exploited small and marginal farmers and landless laborers by lending to them at a high interest rate and by manipulating the accounts to keep them in debt trap. एक बंदे को अगर उसकी कमाई से ज्यादा आप लोन दे देंगे तो होगा क्या, वो कभी वापस तो कर नहीं पाएगा। तो आप चाहोगे कि उसका बस उसको डेट ट्रैप में घुमाते रहो, क्योंकि आपके पास पैसा तो पड़ा है, आपकी नजर किसके ऊपर है, उसके एसेट्स के ऊपर है, उसकी जमीन के ऊपर है या उसकी जायदाद घर के ऊपर है। तो ये चलता रहता है। तो मनी लेंडर्स आर जनरली इन दैट कैटेगरी। Now, a major change occurred after 1969 when India adopted social banking and multi-agency approach to adequately meet the needs of rural credit. Now, later, the National Bank for Agriculture and Rural Development was set up in 1982. ये जो 1969 की बात हो रही है ना, ये रीजनल रूरल बैंक्स और ये सब इंडिया में छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, ये सब स्टार्ट किया गया था। 1969 is the time when public sector banking also began in a major way because nationalization of banks was done. तो जब हम financial system पढ़ेंगे तो उसके अंदर ही आएगा, ठीक है? So let's see. The Green Revolution was the harbinger of the major changes in the credit system. हमें मालूम है, हमने पढ़ा कि ग्रीन रेवोल्यूशन तभी पॉसिबल थी अगर उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी कैसे आएगा, सीड, फर्टिलाइजर, ये सब कैसे खरीदे जाएंगे। Now, the institutional structure of rural banking consists of a set of multi-agency institutions. इसको बोलते हैं multi-agency approach. Namely, commercial banks, regional rural banks, cooperatives, land development banks, and so on. साथ ही साथ there are also self-help groups. तो SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम भी है इंडिया में, जहाँ पे छोटे छोटे लोगों के ग्रुप बन जाते हैं, 10-20 लोग जो एक ही गांव में या एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, वो अपना छोटा सा एक सेविंग फंड क्रिएट करते हैं और उसी फंड में से फिर एक दूसरे को लोएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंड भी करते हैं। So that's called a self-help group. They pay to themselves. That's the meaning of it. Okay, and thereby people are able to work. फिर इनके मॉडल को as it is RBI ने भी सपोर्ट किया. So there was an SHG bank linking program that RBI started later on. NABARD ने इसको शुरुआत में थोड़ा सा एक बार प्रोत्साहित किया था. So what's the situation of rural banking right now? So rapid expansion of the banking system had a positive effect upon rural farm and non-farm output, income and employment, especially after the Green Revolution. तो पॉजिटिव है इसके ज्यादातर एस्पेक्ट्स। इनफैक्ट इंडिया में जो रूरल क्रेडिट मिलता है वो गवर्नमेंट के द्वारा सेट रेट है 7%, उसके ऊपर मिलता है। उस रेट के अंदर भी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स हैं, तो इफेक्टिव रेट जो है वो 3 से 4% के बीच में रहता है। सो इंटरेस्ट रेट इज वेरी लो। तो किसान क्रेडिट कार्ड है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स हैं, आगे जाके जब हम नोट्स बनाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे, तो उनके थ्रू काफी बेनिफिट मिला है। और ज्यादातर कमर्शियल बैंक्स जो हैं वही सबसे ज्यादा रूरल एरियाज में क्रेडिट देते भी। ओके, सो it helped the farmers to avail services and credit facilities and a variety of loans for meeting their production needs, even their consumption needs. So किसान क्रेडिट कार्ड में से तो आप दोनों तरफ से बोरो कर सकते हो जब भी चाहिए। With possible exception of the commercial banks, other formal institutions have failed to develop the culture of deposit mobilization, lending to worthwhile borrowers and effective loan recovery. तो एक जो ट्रबल रहा है एग्रीकल्चर में
आपने सुना होगा फार्म लोन वेवर, किसान का कर्जा माफ करने वाला है ना। तो वो एक पॉलिटिकली एक अटेम्प्ट है, एक तरह से वोट बैंक पॉलिटिक्स का पार्ट है कि ठीक है किसानों का कर्ज माफ कर देते हैं इलेक्शन के आसपास आके, तो उससे उनको वोट्स मिल जाते हैं। लेकिन इससे एक नेगेटिव कल्चर भी ब्रीड होता है, इसमें किसान लोन तो ले रहा है लेकिन वो फिर वेट करता है कि भाई इलेक्शन आने दो, फिर अपने आप कर्ज माफ करवा लेंगे, है ना। तो उससे क्या होता है कि फाइनेंशियल सिस्टम डिटीरियोरेट करता है। So that's what creates a trouble in agricultural loans. Okay. So thus expansion and promotion of rural banking sector has taken a backseat after reforms. And to improve the situation, it is suggested that banks need to change their approach from just being lenders to building up relationship banking with borrowers. Inculcating the habit of thrift and efficient utilization of financial resources needs to be enhanced among the farmers too. So basically savings need to increase. Yeah. तो बजाय इसके कि आप सिर्फ एक लोन गिविंग इंस्टीट्यूशन बनो, एक सेविंग्स की हैबिट भी डालना अच्छी बात होगी। उससे जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है बेटर होगा, आगे जाके जो फाइनेंशियल सिस्टम्स भी डेवलप होंगे रूरल एरियाज में बेटर होंगे। देन देयर इज अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केट। कुल मिला के जो भी फार्मर हार्वेस्ट के थ्रू प्रोड्यूस कर रहा है उसको सेल करने के लिए एक मार्केट चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ फॉरवर्ड लिंकेजेस। क्या तो हमने पढ़ा था जितनी ज्यादा फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस डेवलप होंगी उतना आसान होगा कोई भी काम करना, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे इंडस्ट्री, चाहे सर्विस सेक्टर। So agriculture marketing is a process that involves the assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading, and distribution of different agricultural commodities across the country. अब ये अपने आप में एक डेफिनेशन है जो सीधी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी में। Which of the following is involved in agriculture marketing? तो वहां पे ये सारी चीजें लिखी होंगी, तो फिर जिन बच्चों ने ये एनसीईआरटी डेफिनेशन नहीं पढ़ी वो बेचारे कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि और कोई किताब बोलती नहीं इसके बारे में ऐसे। ठीक है। So prior to independence, farmers, while selling their produce to the traders, suffered from faulty weighing and manipulation of accounts. इस तरह से ना ढेरियां लगा देते थे और बोलते थे ये वाली जो ढेरी है इसका इतना प्राइस मिलेगा जी, this particular mound of grain will get this much amount. कोई क्वालिटी का नहीं देखते थे, कोई वेट्स एंड मेजर्स ढंग से नहीं देखते थे। ठीक है। So that used to be the situation prior to independence. So farmers who did not have the required information of prices prevailing in the markets were often forced to sell at low prices. So basically price information and information asymmetry was the main issue. Even today, more than 10% of the goods produced in farms are wasted due to what? Let's see. Lack of storage. तो जो फार्म प्रोड्यूस हुआ तो वो बेचारा किसी गोडाउन में कहीं ना कहीं स्टोर हो सकता है नहीं। Therefore, state intervention became necessary to regulate the activities of private traders. So what all was done? So we created, the first step of the regulation of the market was to create orderly and transparent marketing conditions. आज तो बहुत ज्यादा improvements कर दी, जब हम agriculture marketing पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। For example, we have electronic national agriculture market. We got a refined APMC Act. So आजकल तो बहुत कुछ हो चुका, लेकिन एनसीईआरटी में अभी उतना कुछ नहीं बताया हुआ है। So second component is the provision of physical infrastructures like road, railway, warehouses, godowns, cold storage, and processing units. So the current infrastructure facilities are quite inadequate, आज भी ऐसे ही, to meet the growing demand and needs to be improved. So cooperative marketing is realizing the fair prices of farmers' product is the third aspect of the government initiative. तो कोऑपरेटिव्स के ऊपर बहुत काम कर रही है सरकार। जैसे पिछले बजट के अंदर ही 2022 में ये बात की गई कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो दे आर लाइक कोऑपरेटिव मार्केटिंग, जिसमें फार्मर्स खुद ही अपना प्रोड्यूस करें भी और फिर उसको बेचें भी। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू ड्रिंक मिल्क, सो वेरका और अमूल और सरस, सो दीज आर वेरियस कोऑपरेटिव्स, milk cooperatives. So they, they are successful in terms of pooling their resources together and being able to earn together. Yeah. तो गुजरात के अंदर अमूल जो है वो अपने आप में फेमस है इस चीज के लिए। अमूल तो अब पैन इंडिया चल रहा है। Now, however, cooperatives have received a setback during the recent past due to inadequate coverage of farmer members, lack of appropriate link between marketing and processing, and inefficient financial मैनेजमेंट। तो
तो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव्स में आजकल थोड़ा इशू आ भी रहा है, क्योंकि जहाँ पे पैसा ज्यादा आएगा थोड़े बहुत इश्यूज आ जाएंगे. The fourth element is the policy instrument, assurance of MSP for agriculture products, maintenance of buffer stock of wheat and rice by the FCI, Food Corporation of India, and distribution of food grain and sugar through public distribution system or PDS. So that's the fourth element, जहाँ पे basically government क्या कर रहा है, price intervention कर रहा है. पहले खरीद रहा है महंगा, फिर बेच रहा है सस्ता, और अपने पास एक बफर स्टॉक भी रख रहा है कि अगर मार्केट में किसी चीज की कमी पड़ जाए तो गवर्नमेंट रिलीज कर पाए, wheat, rice, basic food grain. So these instruments are aimed at protecting the income of farmers and providing food grains at subsidized rate to the poor. However, despite government intervention, private trade predominates the agriculture market. तो आज भी ऐसा नहीं है कि प्राइवेट ट्रेडर्स कुछ खरीदते नहीं एग्रीकल्चर मार्केट से, ज्यादातर वही खरीद रहे. The need for government intervention is imminent, particularly where a large share of agriculture product is handled by the private sector, because there more exploitation room is there for the farmer. कम प्राइसेस मिल सकते हैं, उनकी मर्जी चलेगी प्राइवेट ट्रेडर की. फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ एप्पल्स बीइंग परचेज्ड बाय प्राइवेट ट्रेडर्स इन हिमाचल. So Adani Group was the major buyer of apples in Himachal. The all red apple, जो 80% से ज्यादा रेड है, वो उन्होंने खरीदा करीब 85 या 87 रुपीज से मैक्सिमम था, और 75 रुपीज मिनिमम था पर केजी. ओके, जो उससे कम 80% से कम रेड है, तो वो खरीदा गया करीब 17 रुपए 20 रुपए के बीच में. सो दिस वाज द प्राइसिंग. अभी जब वो बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू अ मोर स्टोर, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, एंड जहां पे भी आपको आजकल मार्केट में ज्यादातर एप्पल जो मिलेगा, सो दैट्स अडानी ग्रुप इज समवेयर इन्वॉल्व्ड इन दैट. सो you will never find an apple coming below 100 rupees a kg anywhere. 100 rupees a kg is also a price that will not actually discover in the market. You may find 150 rupees upward. So it has made almost 2 times the profit. अगर सोच के देखो तो, है ना, तो जितने का खरीदा उससे डबल बेच रहे हैं. तो फार्मर को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो. अब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव मार्केटिंग का कंसर्न यही है कि जो फार्मर है वो डायरेक्ट सेल करे, एंड टू एंड चेन हो, फार्म टू फोक, सो दैट मैक्सिमम जो पेमेंट एक कंज्यूमर कर रहा है उसका हिस्सा फार्मर को दिया जाए. दैट्स द कॉन्सेप्ट बिटवीन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन. I gave you the example of apple, which is still giving a sufficient return to farmer. But if you go to other things like vegetable, rice, wheat, वहां पे तो उतना रिटर्न भी नहीं है. वहां पे तो मुश्किल से 15-20%, 30% तक का रिटर्न होता है. That's it. So if consumer is paying 100 rupees, the farmer can maximum will get 10-15 rupees. इस तरह के हालात है. बाकी सब इंटरमीडियरीज जितने भी आएंगे वो ले जाएंगे. इसीलिए there is a concept of disintermediation in agriculture. So anyhow, emerging alternative marketing channels. So it has been realized that if farmers directly sell their produce to consumers, it increases their incomes. Some examples are Apni Mandi in Punjab, Haryana, and Rajasthan, Hadaspar Mandi in Pune, Raitu Bazar in Andhra Pradesh and Telangana, Uzavar Sandis in Tamil Nadu. ये match the following question आ सकता है, ठीक है, कि कौन सा कहां पे चलता है. Then further, several national and multinational fast food chains are increasingly entering into contracts alliances with farmers to encourage them to cultivate farm products. For example, Reliance Fresh, it's a national firm. Amazon is now going into this. Yeah, so they want farmer contracts, and based upon those contracts they will be, इसको contract farming बोलते हैं. So they will be purchasing the product from the farmer and then selling it in the open market. Okay, so that's the situation here. तो उसमें वो जो टेक्नोलॉजी, सीड, ये सब भी देना है, वो भी फार्मर्स को हेल्प करेंगे. नाउ it is argued that such arrangements will help in reducing the prices or price risk for farmers and would also expand the markets for farm products. But इसके pros and cons दोनों हैं. कॉन्स ये हैं कि फार्मर्स जब तक तो उनका प्रोडक्ट ऑफटेक हो और वो प्रोटेक्टेड हो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तब तक तो ठीक है. लेकिन अगर उनको ग्राउंड लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट ठीक से ना हो तो फिर ट्रबलसम हो जाता है.
और हमें मालूम है कि फार्मर के पास कोई ऐसी लॉयर लॉबी तो है नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट करवा लेगा। ये तो कंपनीज के ऊपर है कि वो कितने अच्छे से अपना कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करते हैं। देन डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। सी, डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स टू एस्पेक्ट्स। अब ये भी मेंस में आंसर राइटिंग के लिए हेल्पफुल है। वन रिलेट्स टू चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, तो आमतौर पे डाइवर्सिफिकेशन को सिर्फ यही समझा जाता है। एंड अदर रिलेट्स टू शिफ्ट of workforce from agriculture to other allied activities like livestock, poultry, fishery, and non-agricultural sector also. That means industry and services. So diversification has a wider sense. आमतौर पे हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बोल के डाइवर्सिफिकेशन खत्म कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो प्रीलिम्स में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ओके। Then the need for diversification arises from the fact that there is greater risk in depending exclusively on farming for livelihood. ये तो पक्की बात है कि कभी भी आप एक चीज के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते in terms of your livelihood. You need to expand. You have to generate areas of active and passive income. Yeah? कि कुछ चीजें हैं जहां से आप passively पैसे earn कर रहे हो. Let's say for me, if I write some books and then those books are sold in market and I get a royalty on that. तो उसमें मैं एक बार किताब लिख दिया, उसके बाद पैसिव इनकम है। You create some YouTube channels and on those YouTube channels, on the basis of views, you will get certain income. So that's another way to earn money. So this way, there are various ways that you need to create passive income for yourself, apart from what you are actively pursuing. So farmers के लिए भी ये सत्य है। So the need for diversification arises from the fact that you cannot exclusively depend upon it. Now, diversification towards new areas is necessary not only to reduce the risks from agriculture sector, but also to provide productive, sustainable livelihood options to rural people. क्योंकि अगर certainty of income नहीं है, तो certainty of investment भी नहीं आएगा, और फिर आप growth नहीं कर पाओगे। So that's the consideration that you need to move with. Now, therefore, expansion into the sectors is essential to provide supplementary gainful employment in realizing higher levels of income for the rural people to overcome poverty and other tribulations. Hence, there is a need to focus on allied activities, non-farm employment, and other emerging alternatives of livelihood. So though there are many other options available for providing sustainable livelihood in rural areas, as agriculture is already overcrowded, बहुत ज्यादा लोग जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा उसमें काम कर रहे हैं। इसको disguised unemployment भी बोलते हैं। A major portion of increasing labor force needs to find alternative employment opportunities. मतलब खेती-बाड़ी सोच के कुछ और उनको करना चाहिए, non-farm employment. So इसमें अब क्या-क्या आ सकता है? For example, this jaggery making, गुड़ बनाते हैं लोग, है ना? So this is also a non-farm employment. So various other things can be done. So there can be agro-processing sectors, leather industry, tourism industry, food processing industry. So this needs to be developed. Along with that, traditional home-based industries like pottery, craft, handloom, these can be developed in rural areas. Livestock development can be done. Yeah. So इस तरह की non-farm activities की जा सकती हैं. So animal husbandry is one of the areas where we are very functional as it is. क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो क्रॉप और नॉन क्रॉप इस तरह से अगर इनकम में डिवाइड करूं फार्मर की, तो 60% के आसपास इनकम फार्मर की जो है एज पर द इकोनॉमिक सर्वे वो आती है क्रॉप से, और नॉन क्रॉप दैट मींस लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशरी, इससे करीब 40% इनकम आती है। ठीक है, जिनमें से लाइफ स्टॉक जो है वो करीब करीब 26% है 40 में से। तो लाइफ स्टॉक एक मेजर एक तरह से बैकअप क्रिएट करता है या फार्मर इनकम का एक हिस्सा है। ठीक है, सो लाइवस्टॉक प्रोडक्शन provides increased stability in income, food security, transportation, fuel and nutrition for the family without disrupting the other food producing activities. तो ये तो ऑन फार्म ही साथ साथ ही आप कर सकते हो, कोई स्ट्रेस नहीं क्रिएट करता आप में अलग से। मे बी इट्स पोल्ट्री, मे बी इट इज कैटल, शीप रेयरिंग और पिग्स, व्हाटएवर। सो इसमें इंडिया जो सबसे ज्यादा जिस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है वो है फिशरीज, दैट्स अंडर ब्लू रेवोल्यूशन। या The fishing community regards water bodies as mother or provider,
and sea, oceans, salt water or fresh water fisheries सब जगह चल रही हैं. Presently, fish productions from inland sources contribute about 64% of the total value of fish production, and the balance 36% come from the marine sector, that is the sea or the ocean. आमतौर पे बंदा उल्टा सोच सकता है अगर वो ना पढ़ेगा ये तो, ठीक है. So in India, West Bengal, Andhra, Kerala, Gujarat, Maharashtra, and Tamil Nadu are the major fish producing states, and shrimp is something that we export the most. So जब हम फिशरीज के बारे में पढ़ेंगे ब्लू रेवोल्यूशन तब उसमें पढ़ेंगे. Horticulture is for vegetables, fruits, so that's what is covered in horticulture. So tuber crops, flowers, medicinal and aromatic plants, spices and plantation crops. So all of them are horticultural crops. इनकी डेवलपमेंट के ऊपर भी काम किया जा रहा है. Then there are many other things like sericulture is there, silk rearing के लिए. So sweet revolution is going on for honey. आजकल तो अरोमा मिशन चल रहा है जिसके अंदर लेवेंडर कल्टीवेशन हो रही है. आप इस हफ्ते के करंट अफेयर्स के अंदर उसको पढ़ेंगे. Yeah. So all that is being promoted by the government as an additional economic resource for the rural community. Then sustainable development and organic farming. ये भी बहुत न्यूज में रहता है for one or the other reasons. So basically ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स जो थे ये प्रमोट हुए, लेकिन इंडिया में अब क्या होता है ना, बारिश की वजह से ये लीच इन कर जाएंगे इनटू द ग्राउंड वाटर, फिर आपकी फूड चेन में एंटर करेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे हेल्थ के साथ रिलेटेड. So they are not very eco-friendly. That's why we are trying to create the organic farming. Sikkim in 2018 was the first state to go fully organic in India. And moment it happened, 2019 prelims में ये question भी आ गया. Which of the following state is the first fully organic state of India? So that is Sikkim. Yeah. उसके बाद second अभी तक add नहीं हुआ है. That's a separate part. So anyhow, so organic farming का basic सा concern ये है कि we are not using any kind of chemical things. We are using all natural things, ingredients into the farming. So organic agriculture offers a means to substitute costlier agricultural inputs with locally produced organic inputs that are cheaper and thereby generate good returns on investment. So organic agriculture also generates income through exports as the demand for organically grown crops is on the rise. I'll give you one example. Anything you just go to Amazon and check for organic versus normal, or you go to any store, you will find that the organic products are much more costly. If I am to buy a dal, simple dal, dal, so it will be like, somewhere near 100 rupees, let's say, and then the organic will be at least 150, 160, यहाँ पे आ जाएगा. 50% price jump है उसमें. कारण क्या है? So organically grown food have more nutritional value than chemical farming, thus providing us healthy foods. And moreover, you don't have to worry about the poisoning aspect of the chemicals. Yeah, it is pesticide free and in an environmentally sustainable way. So popularizing organic farming requires awareness and willingness on the part of farmer to adapt the new technology. तो यहाँ पे हमारे पास एक तरीका क्या है ना कि certification of organic foods. So that's very important. तो उसमें organic certification का mechanism पूरा गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, ठीक है. So let's see. At present, as many as 130 farmers have committed to 1200 hectares to grow cotton organically on International Federation of Organic Agriculture's movement standard. ये तो पुराना है, ठीक है, Agrico. So the produce was later tested by the German accredited agency Agrico and found to be of high quality. So Kisan Mehta feels that about 78% of Indian farmers and are marginal farmers, and owing to about less than 0.8 hectares, but accounting for 20% of India's cultivable land. For such farmers, organic agriculture is more profitable in terms of money and soil conservation in the long run. तो हमारे जो छोटे किसान हैं उनके लिए तो ये और भी बेनिफिशियल है क्योंकि उनका खर्चा कम होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए. We'll study in detail what is organic farming later on when we are dealing with the entire syllabus in the means sense. अभी के लिए इतना sufficient है to give you the idea. Prelims में वो इतना ही पूछते हैं chemical free, that's organic farming. Okay, so that's it about the rural development. Next is employment, so which concerns about growth, informalization, and other issues of employment. So let's see what all is to be there in employment.
Okay. What is employment and who is a worker? First, let's try and understand this. So when a farmer works on a field, he or she produces food grains and raw materials for industry. Cotton becomes cloth in textile mill and in power looms. Lorries transport goods from one place to another. We know that the total money value of all such goods and services produced in the country in a year is called as gross domestic product for that year. So ये इसकी GDP की definition भी आ गई. Monetary value of all the final goods and services produced within a country within a year. That is GDP. So when we also consider what we pay for our imports and get from our exports, we find that there is a net earning of the country which may be positive or negative or zero, depending upon आपके imports ज़्यादा हैं या exports ज़्यादा हैं. When we add this earning from foreign transactions, what we get is called as country's gross national product of the year. So basically, GDP plus net factor income from abroad is GNP, gross national product. ये सब हम +2 की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उसके अंदर डील करते हैं. नेशनल इनकम का एक चैप्टर होता है, तो डोंट वरी, विल डील विद दैट देयर. अभी नहीं, ठीक है. So those activities which contribute to gross national product are called as economic activities. कुल मिला के इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलेंगे? जिससे कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट हो रहा है. इतना समझ लो. So all those activities, all those who are engaged in economic activities in whatever capacity, high or low, are workers. जो कोई भी बंदा इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी आउट कर रहा है उसको बोलते हैं वर्कर. Even if some of them temporarily abstain from work due to illness, injury, or other physical disability, bad weather, festival, etc., they are also workers. कुछ देर के लिए जैसे किसान जो है वो खेती करता है, फिर कुछ देर फ्री रहता है, फिर खेती करता है, तो he is also a worker. Workers also include all those who help the main workers in their activities. जैसे एक मिस्त्री होता है और साथ में 2-4 जाने उसके हेल्पर आए होते हैं, तो वो भी तो वर्कर ही है. We generally think of only those who are paid by an employer for their work as workers. This is not so. Those who are self-employed are also workers. For example, I am a self-employed person, so I am also a worker. Nobody pays me to work. I am working out of my own regard. Yeah. So that helps me earn. Okay. So the nature of employment in India is multifaceted. Some get employment throughout the year. Some others get employment only for a few months in a year. Many workers do not get fair wages for their work. किसी को पूरे पैसे मिलेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे. While estimating the number of workers, all those who are engaged in economic activities are included as employed. अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे कोई भी गुड या सर्विस आप प्रोड्यूस करोगे, तो हम आपको एम्प्लॉयड मानेंगे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट आपके लिए रेम्यूनरेटिव है चाहे नहीं. ठीक है. So you might be interested in knowing the number of people actively engaged in various employment activities. So around 2011-12, we had 473 million strong workforce. So workforce कौन है? जो लोग actively काम कर रहे हैं. Since majority of our people reside in rural areas, the proportion of workforce residing there is also higher. Obviously, अगर 63% people are living in rural areas, so definitely rural workforce is going to be more than the urban workforce. That's a fact. Then men form the majority of workforce in India. क्योंकि patriarchal society है या कुछ भी कह लीजिए. So women workers account for 1/3 of the rural workforce, whereas in urban areas they are just 1/5 of the workforce. So this is like women being absent from the workforce. Why? Because women carry out work like cooking, fetching water, fuel wood, and to participate in farm labor. They are not paid wages in cash or in the form of greens. At that time, they are not paid at all. So जिस काम में women employed हैं, so that is unpaid work. And since it is unpaid work, it is not considered as a part creating the economic monetary aspect. And therefore, they are not considered as a part of the workforce. हालांकि काम तो वो भी कर रहे हैं. So for this reason, these women are not categorized as workers. And economists have argued that these women should be called workers. Because अगर ये काम नहीं कर रहे तो फिर कोई और इनका काम करेगा. उसकी भी एक सेल्फ वर्थ, मनी वर्थ होना जरूरी है. Yeah. So participation of people in employment.
So worker population ratio is an indicator which is used for analyzing the employment situation in country. Total population है और उसमें से कितने लोग काम कर रहे हैं. That is the worker population ratio. Okay. So population is defined as the total number of people who reside in a particular locality at a point of time. So locality can be a small town, a locality can be a village, a locality can be a state, like that. So to know the worker population ratio of India, divide the total number of workers in India by the population in India and multiply it by 100. That's the formula for worker population ratio. Yeah. So how is it, the worker population ratio in India? So total worker population ratio is 38.6. Rural is a bit higher as compared to urban. Okay. And men has a higher worker population ratio as compared to women. Urban women are especially low in this category. अभी तो ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 2015 में लास्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, तो उस टाइम पे 17% आ रहा था वुमेन के लिए. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. कितनी वुमेन हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं इन द लेबर फोर्स और इन द वर्क फोर्स. तो दैट्स dwindling for women. Yeah. So let's see. Compared to females, more males are found working, and the difference in participation rates are very large in urban areas. For every 100 female, only about 15 are engaged in some economic activity. Rural areas में तो फिर भी ठीक है comparatively. Why are women in general and urban women in particular not working? So it is common to find that men are able to earn higher income. Families discourage female members from taking up the jobs. So I have seen this, in n number of families, that the male members are offered higher salaries in n number of companies as compared to the female counterparts. So this is there in India. So going back to what, not talking about government jobs, but I'm talking about private jobs. So going back to what has already been mentioned above, many activities for the household engaged in by women are not recognized as productive work. So this narrow definition of work leads to non-recognition of the work done by women. Okay? So this is another trouble. Therefore, to the underestimation of number of women workers in country. तो ये जो दिख रहा है ना 15%, 17%, ये एक्चुअली गलत है, क्योंकि काम तो वो कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं वो रिकग्निशन नहीं है उस काम की. Then self-employed and hired workers. So does the worker population ratio say anything about worker status in society or about working conditions? Actually, it does not. So by knowing the status with which the worker is placed in an enterprise, it is possible to know one dimension, that is the quality of employment in the country. So India में ये तो हमें मालूम है कि quality of employment बहुत बेकार है. ठीक है. क्यों बेकार है? क्योंकि the amount of money that they're going to get is uncertain and it is generally low. Per capita incomes come hai, salary levels, wage levels come hai. Okay. Then let us take three workers from construction industry: a cement shop owner, a construction worker, and a civil engineer for a construction company. Since the status of each one of them is different from another, they are also called differently. The workers who owns and operates an enterprise earn their livelihood are known as self-employed. तो जो खुद का काम कर रहे हैं. Then the construction workers are also known as casual wage laborers. तो जिन बेचारों को शायद एक दिन दिहाड़ीदार जिनको बोलते हैं, काम मिलेगा या नहीं मिलेगा मालूम नहीं. Then there's the third category, that is the regular salaried employees. So they are paid on regular basis. So there are wages being paid on regular basis. So they are salaried employees. India में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, they are self-employed. तो ये भी prelims में question आता है. ठीक है. So urban areas में you will find self-employed are the highest. Rural areas में भी self-employed are the highest category. Then second category in urban areas is the regular salaried employees. Rural areas में तो industries या enterprises इतने हैं नहीं, तो regular salaried employees उधर कम. Then the third category is the casual wage labor, जो कि rural में ज़्यादा होगी, urban में कम होगी. So that's the distribution of the employment by region. Okay. और इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर यही आता है कि इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो self-employed. Now
Basically, nature of work or establishments different है rural or urban areas में. That's the reason it is like this. So employment in firms, factories, and offices. So generally, we divide all activities or economic activities into 8 different industrial divisions. These are agriculture, mining and quarrying, manufacturing, electricity, gas and water supply, construction, trade, transport and storage and services. ये 8 इंडस्ट्रियल या डिविजन्स बोलते हैं हम, अलग अलग जगह जहां पे लोग काम करते हैं, ठीक है. So for simplicity, all the working persons engaged in these divisions are clubbed into 3 major sectors. So we call them primary, which includes only one, that is agriculture. Then there is secondary, which includes 2, 3, 4, and 5. That means mining, quarrying, manufacturing, electricity, gas, and water supply. Then there is services, which includes 6, 7, and 8. That means the trade, transport, storage, and other services. So इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर हमारे पास बनता है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है. So this is very important definition perspective. Distribution of industry, primary, secondary, and tertiary. So अभी के लिए अगर देखा जाए प्राइमरी, सेकेंडरी का, तो in general in the primary sector you will find 48% of the workforce in 2011-12. In secondary, that means in the industrial aspect you have 24%, and in tertiary sector you have another 26% of the workforce involved. But हमने देखा था कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ये 15% पे है और ये दोनों मिलके 85% के आसपास जीडीपी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है. सो दैट्स व्हाट इज डिस्कस्ड हियर आल्सो, ठीक है. हालांकि एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर नॉट अर्निंग एज मच. दिस इज द ट्रबल विद द occupational structure of India. Okay, that's what is discussed in this entire thing. Now, growth and the changing structure of employment. So during 1950 to 2010, GDP of India grew positively and was higher than the employment growth. So, however, there was always fluctuation in the growth of GDP. During this period, the employment grew at the rate of not more than 2%. तो धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हो रहा है, ज्यादा नहीं. Then chart 7.3 also points at another disheartening development of the late 1990s. Employment growth started declining and reached a level of growth that India has had in the early stages of planning. During these years, we also find a widening gap between growth of GDP and employment. This means Indian economy, without generating employment, we have been able to produce more goods and services. So scholars refer to this phenomena as jobless growth, जिसकी हम कल discussion कर रहे थे, ठीक है. That's the situation in India, jobless growth. Look at this chart. So growth has been higher, while the employment generation has always kept a lower pace. उतनी jobs नहीं generate हो रही. इसी को employment elasticity का concept भी हम बात कर रहे थे कि 1% अगर हमारा जीडीपी ग्रोथ होता है तो उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट में कितना ग्रोथ हो रहा है. चेंज इन एम्प्लॉयमेंट पर यूनिट चेंज इन जीडीपी ग्रोथ रेट, सो वो इंडिया में कम है. इसकी वजह से एक बंदे के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है एक से दूसरी जॉब में जंप करने की. तो इसीलिए गवर्नमेंट भी अब आजकल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात ज्यादा करता है, स्किल डेवलपमेंट की बात ज्यादा करता है कि भाई खुद ही आत्मनिर्भर बनो, ज्यादा किसी से जॉब ढूंढने मत जाओ, ठीक है. So that's the situation. Okay. So next aspect is casualization of workforce. So essentially, scholars say that in the last 4 decades, people have moved from self-employment and regular salaried work to casual wage work, जिसको हम gig economy भी बोलते हैं आजकल. Gig economy में क्या है कि मेरे को कहीं पे भी कोई काम मिला छोटा सा, मैंने वो कर लिया, पैसे चार्ज किए, फिर मैं फ्री हो गया वहां से, फिर कहीं और काम करना चला गया. ये भी एक तरह से casual wage worker जैसा ही है. So yet self-employment continues to be the major employment provider, and scholars call the process of moving from one self-employment and regular salaried employment to casual wage as casualization of workforce. So ये definition याद रखनी है कि क्या होता है, ठीक है. तो एक बंदा खुद का बिजनेस कर रहा है, फिर वहां से वो कहीं से सैलरीड एम्प्लॉयमेंट पे चला जा रहा है, फिर वहां इन दोनों से अगर वो कैजुअल
वर्कर बन रहा है तो देन दैट्स कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल और सेल्फ सैलरी टू कैजुअल. Okay, in both cases it's called casualization of workforce. दूसरी जो ट्रबल है हमारे इंडिया के एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो के अंदर, दैट इज द इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स. कहने का मतलब फॉर्मल एसोसिएशन के थ्रू वर्कर्स काम नहीं कर रहे. फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर्स और प्रिविलेजेस या रेगुलेशन के थ्रू वर्कफोर्स काम नहीं कर रहे. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. So it has been envisaged that industrialization strategy would bring surplus workers from agriculture to industry with better standards of living as in developed countries. तो ये हम सोचते थे कि ऐसा होगा जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी इंडिया के अंदर. So even after 55 years of planned development, more than half of Indian workforce depends upon farming as a major source of livelihood. Economists argue that over the years, the quality of employment has been deteriorating. Even after working for more than 10 to 20 years, why do some workers not get maternity benefits, provident fund, gratuity and pension? तो ये जो बेसिक एक वर्कर बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलते. कारण क्या है? You may find a small section of Indian workforce is getting regular income. The government, through its labor laws, enable them to protect their rights in various ways. And this section of workforce forms trade unions, bargains with the employers for better wages and social security and other measures. इनको बोलते हैं फॉर्मल वर्कफोर्स, जिनके पास ये सारी सहूलतें हैं. जिनके पास ये सब नहीं है, जो लेबर लॉ के अधीन नहीं आते, या जो ट्रेड यूनियंस नहीं बना पाते, या जिनको सोशल सिक्योरिटी मेजर्स जिनके लिए प्रोवाइडेड नहीं है, दे आर कॉल्ड इनफॉर्मल वर्कफोर्स. So all the public sector establishments and those private sector establishments which employ 10 hired workers or more are called formal sector establishments. And those who work in establishments are called formal sector workers. तो सरकारी कंपनियां या ऐसी प्राइवेट कंपनियां जिसमें 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं उनको फॉर्मल बोलते हैं. लेकिन इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर का साइज बहुत बड़ा है, फॉर्मल सेक्टर का साइज बहुत छोटा है उसके कंपैरिजन में. ठीक है. So 8% to 92%, that's the variation. Formal sector is about 8%, 92% is the informal sector in India. Okay. So देखो ये, ठीक है. So then इनफॉर्मलाइजेशन भी अब बढ़ रहा है. धीरे धीरे कंपनियां क्या है ना अपना साइज कम कर रही हैं या अपने फॉर्मलाइजेशन से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर बहुत सारे लेबर लॉज उनको फॉलो करने पड़ेंगे और ट्रेड यूनियंस को रिकग्निशन देना पड़ेगा, बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ वर्कर को भी रिकग्निशन देना पड़ेगा. इस वजह से दे अवॉइड फॉर्मलाइजेशन. सो नाउ इट इज अनएम्प्लॉयमेंट. So unemployment is basically a gap between demand and supply of employment. कितनी नौकरियां चाहिए और कितनी अवेलेबल हैं, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको सिंपली हम अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी बोलते हैं. ठीक है. सो रूरल एरियाज में ज्यादा लोग जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं, एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब हो जाते हैं. इस वजह से वहां पे इस तरह की सिचुएशन थोड़ी सी कम आती है, एग्रीवेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम होता है. अर्बन एरियाज में अब खेती बाड़ी तो कर नहीं सकते, तो आपके पास लिमिटेड एरियाज ऑफ वर्क हैं, वर्क अपॉर्चुनिटीज हैं. इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस वहां ज्यादा डिस्क्रीटली नजर भी आती है. सो दिस इज द इशू. So economists define unemployed persons as one who is not able to get employment even 1 hour in half a day. आधे दिन में किसी को 1 घंटे का भी काम ना मिले तो उसको हम unemployed बोलते हैं. There are 3 sources of data on unemployment: the report of Census of India, NSSO, and unemployment situation and Directorate General of Employment and Training data registration with Employment Exchange. तो इनके थ्रू हमारे पास डेटा मिलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का हाल क्या है इंडिया के अंदर. तो कोविड के चलते अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, पीछे आपने देखा. प्रेजेंटली हम इसको मेजर कैसे करते हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. तो देयर इज अ डेली स्टेटस, अ वीकली स्टेटस, एंड लाइक दैट वी हैव वेरियस काइंड ऑफ स्टेटस जो एनएसओ जाके डेटा कलेक्ट करता है, वो उस बेसिस पे करता है. सो उसको यहाँ पे नहीं वर्कआउट किया गया, तो जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे विल टॉक अबाउट इट. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट, गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स क्या है? या तो गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट पे काम करता है, या फिर
स्मॉल स्केल कोई टेम्पररी रेम्यूनरेशन पे काम करता है, जैसे कि मनरेगा। सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में पास किया गया था। तो इसके तहत 100 दिन का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। तो इसमें जो मिनिमम जॉब मिनिमम स्केल्स हैं, मिनिमम वेज स्केल्स हैं, वो मिलेंगे। स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, तो ऐसा फिक्स नहीं है। तो किसी स्टेट में 300 रुपया मिलेगा, किसी में 250 रुपया पर डे मिलेगा, इस तरह से चलता है। और मनरेगा वर्कर के कार्ड ज्यादा बन जाते हैं, और 200 से 300 रुपए के हिसाब से कई बार ऐसे ही लोग पैसे खाई जा रहे हैं मनरेगा के भी। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे उसकी इतनी कोई खास एम्प्लॉयमेंट है नहीं और यूटिलिटी नहीं है। लेकिन अब जाके हम मनरेगा से थोड़ा सा काम लेना शुरू किया, जब से इसको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और इन सब में इन वर्कर्स को यूटिलाइज करना शुरू किया गया। दैट्स वेयर द मनरेगा वर्कर्स आर नाउ बीइंग यूटिलाइज्ड। Okay, that's that for employment. Next chapter is on infrastructure. We'll be dealing with that tomorrow. For today, this much is sufficient. If you have any doubts, please do ask. Thank you.